Yeah, good evening, guys. This is the second part of function. I have to discuss in this one composite function. And after that, I would like to give some examples. And afterwards, even function, odd function, inverse function, periodic function, right? And some problem based on domain and some problem based on range. 5 types of range problems are there. Yeah, we'll discuss that. And afterwards, around 25 to 30 problems I'll discuss. That is what lesson one, exercise one. And the second exercise, part two, the second exercise is what? Purely based on previous uh, questions, mains questions I would like to discuss. Okay, so here let us start the problems. Okay, first we'll discuss about composite function. Okay, now you see here, what is mean by composite function? So two functions we needed here, f a to b and g b to c are two functions. And g circle f, we are going to read like this composite function as of two function. We are going to say like this, g circle f a to c is defined by what, Nana? G circle f of x is equal to g of f of x. It is true for all x belongs to a. Right, this is very, very important. Is called out composite function from composite function of what? F and g. Easily you can say that. Okay, from f and g, you can say that composite function of f and g, you can say. What is that? See here, f is defined from a to b, like this, and g is defined from b to c. Then composite function of f and g is denoted by what? G circle f. That is what? From a to c. One thing you please remember here, one beautiful point related to this you remember. So many points are there, but I would like to tell you that g circle f never equal to f circle g. Right, sometimes G circle F exists, but F circle G may not be existent. This is one. Okay, now I'll move on to the next question now. Question based on this will do. Okay, now you see here the question is now F R2R G R2R is defined as like this, and he has given that then the value of x is asking such that G of f of x is equal to 8. R dash is said. What he has given here, G of f of x is equal to 8 he has given. What is f of x? 2x plus 3 is equal to 8. What is g of x? 2x plus 3 whole cube plus 7 is equal to 8. Or else you can write like this, 2x plus 3 whole cube is equal to 1. That means 2x plus 3 is equal to 1 only. Right? Here you can write 1 if it is, and x is equal to minus 2. 2x is equal to minus 2, x is equal to minus 1. Yeah, it is like this. For example, if I said it to you that second example, you see this one, same as it is. F of x is defined as 2x plus 3. And this is given in this competitive exam. X square plus 7 is there. At that time, what? Immediately here, you can write this as what? G of, no doubt, 2x plus 3 is equal to 8, of course. And here, 2x plus 3 whole square plus 7 is equal to 8. And 2x plus 3 is equal to whole square is equal to plus or minus 1 will get. So x is equal to minus 1 is 1 and x is equal to minus 2. Right, x is equal to minus 1 and x is equal to minus 2. You will get like this then. Okay, we'll move on to the next one, guys. Yeah, you see the second question, Nana. It is given in the one of the PYQ. It is right. He has given like this. F and condition also he has given. This is a condition. You see this, Nana, f of x means what? So f of x I can write here. So f of x is my alpha x by x plus 1 here. And once again, if I write here alpha into alpha x by x plus 1 divided by alpha x by x plus 1 plus 1. So you are getting here alpha square x by finally alpha plus 1 into x plus 1.
See guys, this is what f circle f of x. But that fellow has given what? It is equal to 1. X. When you will get x, don't make this one is what? Don't write here it is equal to x and afterwards simplifying. Don't do that. This should be what? Is x when? If this one. That means alpha plus 1. What is that? Alpha plus 1 should be 0. Then only it is possible. 0. If alpha plus 1 is 0, okay, then what happened now? X is equal. Is f circle f is equal to 1. F circle f of x is equal to what? X will get. So what is the value of alpha means? -1. I hope that it is clear. Okay, we'll move on to the next one now. Okay, you see this now, what exactly he has given. Diagrammatical, if you want, I would like to write like this, Nana. See this. A, B, C, Z. 1, 2, 3. 1 maps to 4. 4, 5, 6. 1 to 4. 2 to 5. 3 to 6. He said that this is here. And here, A to B here. B to C. 7. 8 is there. 5 map to 7. 6 maps to 8. Okay. A, B, C. Okay. C is given as like this, Nana. I forgot it to write. 7, 8, 9. Right. So 9 is also there. But unfortunately, no mapping for 9. We have to find this one. What he has given, guys? F of 1 is equal to 1. F of 2 is equal to 5. And f of 3 is equal to what? 6. And g of 4 is equal to 7. And g of 5 is also what? 7. And g of 6 is 8. No mapping for 9. Okay. Okay. 9 is element which is got free here and C. What exactly we have to find? G circle f of 1. This is one way. That means what? G of f of 1. G of f of 1 means here f of 1 is what? No, 4. G of 4 is almost 7. It will be like this. G circle f of 2. So G of f of 2 here. So G of f of 2 is what? 5. G of 5 is also what? 7. G circle f of 3 is there. G of f of 3 it is. And you know very well f of 3 is nothing but 6. G of 6 is 8. So G circle f is how much, Nana? 1, 7. Okay, 2, 7. And the next one is 3, 8. We will get like this. Okay, there is another way, another method is also there. What you do, instead of doing these all things, you write like this: 1, 4, 2, 5, 3, 6, you write. And later on what G you write down second, because G circle F if you want to find, first write F, then afterwards G, Nana. G is what? 4, 7 and 5, 7 and 6, 8. Yeah, you remember directly you can write the answer G circle F. What is that? You start from F, 1 to 4, 4 to 7. I'll change the ink. So that what? 1 to 7. See that we got it. And 2 to 5, 5 to 7. That means 2 to 7. Right. 3 to 6, 6 to 8. 3 to 8. That's it. This is the one of the easiest way for G circle F. Okay. We'll move on to the next one, Nana. Next, we'll do some more question based on a composite function later onwards. But now I want to introduce remaining all functions, Nana. So inverse function. What is that inverse? You take f is a inverse is exists only for bijective functions. You remember that. This is the most fantastic statement is there. Inverse function. See, inverse function is exist only for bijective function, not for other.
So here the definition, here clearly everything I included in this one. See this, a function f a to b is defined as inverse. Okay, a function f a to b is defined, right? To inverse is defined to inverse if there exists a function. What, Nana? If there exists a function defined to be inverse, sorry, defined to be, Nana, to be inverse, if there exists a function g to b, b to a, such that g circle f, ia होना है, f circle g, ib होना है, then the function g is called what? Inverse of a. It is denoted by f inverse, right? F inverse. Okay, please remember, guys. Suppose if I write like this, Nana, you see this one function. I want to take 1, 2, 3 simple examples, 4, 5, 6. Right? If it is like this, chalega. F. You see, Nana, F is like this: 1, 4, 2, 6, and 3, 5. Then what is F inverse? What is that? G. 4, 1. You can write simply 3, 2, and 2 to 6 it is. So 6, 2 I have to write, and 5, 3 I have to write. This is inverse now. Okay, this is inverse. Some more problem. An interesting point is there related to inverse function, Anna. That is, if this is the function and this is inverse of this, these two are always symmetrical on about y is equal to x. Always. And if they are going to intersect, definitely that intersecting point should lie on that line y is equal to x. So please remember, f of x is equal to f inverse x is equal to what? X whenever the graph is intersect. I say. Yeah, I want to do the problems here. Let us go for the problems. Yeah, guys, to solve inverse, you better take like this now. Let y is equal to f of x, and here log x base 5 is there. So y is equal to f of x, you take down. You can write here f inverse y is equal to x nana, say 1. And the next one is y is equal to, you take log x base 5. It can be written as 5 to the power of y is equal to x, this 2 from 1. And 2, what you can write? F inverse y is equal to 5 to the power of 5. That means f inverse x is equal to how much, Nana? 5 to the power of x. Okay, like this, we are going to find inverse. We'll go for the next one, next problem, Nana. Okay. Now, as I said it to you that the rule is rule, Nana. You take y is equal to f of x is equal to 2 to the power of x into x minus 1. You take y is equal to f of x means you can write f inverse y is equal to x. Of course, you got it as 1. And the next one is y is equal to 2 to the power of x into x minus 1. If you take, you will get x square minus x minus log y base 2 is equal to 0. It's a quadratic equation. Yeah. 1 plus, because all are positive, actually minus b plus r minus under root of b square minus 4ac I have to take. But here always we have to take plus. Okay, plus, that's why I don't want to write minus b square minus 1 whole square means 1. 4 a. C is negative is there. This become what? Positive. Negative into negative, positive. Log y base 2 by 2 into 1. So what you got here? X is equal to 1 plus root over 1 plus 4 log y base 2 by 2. This is what? 2. Right. So here from 1 and 2, what we can write now? Means f inverse y is equal to 1 plus, okay, 1 plus, this is under root of 1 plus 4 log y base 5. Okay, base 2. Okay, log y base 2 we can write. Divided by
2 is there. So finally, what you can write, Nana? F inverse x. You replace x as what? Y as by x here. 4 into log x base 2 divided by 2. We got it like this. Okay, we'll move on to the next one. Guys, yeah, one of the in one of the competitive exam is given like this. F R to R be such that f of x is equal to like this. So it is very clear, Nana. What he said here, x minus step x he has given. That is nothing but what fractional part of x. We know very well. If fractional part of x means, yeah, you can write like this. Okay, you can draw the diagrammatically. I'll explain here. It will be like this. I'm trying to draw a diagram. Okay, it's more than enough, I think. This is open. Height is 1 now. What is that? Height is 1. This is 0, 1, 2, minus 1, and minus 2. See, this function is, right, what is that? Step function, not step function, fractional part. Is not a 1, 1. Therefore, it is not a bijective. F of x is not bijective. Okay, not bijective. Not bijective means what? Not defined. Inverse does not exist. Okay, so here option is given not defined. So that's why I selected like this now. So after this one, we'll discuss even and odd function now. Okay, what is the even function? A function, see this, what I said, a function f a to b, where a is a subset of r, is said to be an even function if f of minus x is equal to f of x. Simple examples I'll take, guys. Suppose if I say that f of x is equal to x square, is it an even function? Means just you have to do one. You write f of minus x whole square, x square you're getting. That means what? F of x. So therefore it is what? Even. Simple example. And the second example, if I take here, f of x is equal to something cos x. If I take f of minus x is equal to how much, Nana? Cos of minus x. That is nothing but cos x. Is nothing but again f of x. So these two are even function. Even function. But one of the question is given like this, Nana. F of x is equal to, in a competitive exam, he has given like this, e to the power of x minus 1 and plus x by 2 plus 1. Okay. Then f is dash, 4 options. Even, odd, even and odd both, neither even nor odd, something he has given like this. So now what to do here? So stick on to the basics. What is the basic rule here? F of minus x is equal to f of x. Okay, we'll go for it, whether it is possible or not. F of minus x I'm taking. It is minus x, e to the power of minus x minus 1, minus x. If wherever x is there, I'm substituting now. What? Minus x. So you see, 1 by e to the power of x I can write. 1 minus e to the power of x by e to the power of x. This I can't do anything, right, as it is. So in the next step, what I'm doing here, be careful. After taking LCM, I got it. So that, can I write like this? Minus 1 by, you see this, Nana, e to the power of x minus 1. I'm taking common, right? Minus x by 2 plus 1. Yeah, we got it like this. Okay, we got it in this one. Now, here I'm doing what I have here, e to the power of x minus 1. Okay, guys, right? Now I'm going to write the next step. You see,
It is one of the P by Q question, Nana. So I think there is a small changes. I'm extremely sorry for this, guys. Right? Let me do once again. So the question is, I copied x by like this is there. That means you will get here minus x. Okay, I substituted minus, fine. So minus x is there. 1 by e to the power of x minus 1 minus x by 2. Now it is correct. Here, not e to the power of x, only x is there, right? Now you see, x e to the power of x, if I write, then I have to write here e to the power of x minus 1. And it's x by 2 plus 1. So p by q. That's why I could able to trace it out easily. Right. What I am doing here, x है, देख भाई, e to the power of x minus 1 लिया. अब क्या करना पड़ेगा यार, प्लस x लिखना पड़ेगा. Adding 1 and subtracting 1 here, e to the power of x minus 1, and whereas here x by 2 plus 1. Now if you segregate, if you split, right, you will get what, x divided by e to the power of x minus 1, x by 2 plus 1. See guys, if you simplify these two, what you'll get, x by 2 you'll get x by e to the power of x minus 1 plus 1. So it's same as whatever the given function f of x. What we proved, f of minus x is equal to f of x. So shall we say that f is even? Yes, f is even function. It is given in the previous examination. Okay, we'll move on to the next one, guys. One note, 2 points are there related to even function. Graph of even function is symmetrical about y-axis. One example I would like to take. Yeah, y is equal to x square is even function, symmetrical. Whatever the area it covers, left side of y-axis, right side of y-axis also what same. That's why we are going to say that it is symmetric now. And the same story, you take one point here, that is what x comma y. The similar point if you take here, minus x comma y. Okay, we got it now. Now we'll go for odd function. Okay, odd function. देखेंगे यार, odd function. Okay, a function f a to b. See ना, a function. Okay, f a to b is set to be an odd function. Okay, an odd function. If condition you know, f of minus x is equal to minus f of x for all x belongs to a. That means domain. A is subset of R, guys. Okay, it is understood. You know very well that. So here one example I'll take. Example, suppose f of x is equal to x cube if I take. So f of minus x become what, Nana? Minus x whole cube is equal to minus x cube. That means minus f of x. Odd. Another example I'll take. F of x is equal to sin x if I take. F of minus x become what, Nana? Sin of minus x. Sin of minus x means minus sin x. That is minus f of x. It is also odd function. But one of the examination question I would like to take. Okay. He has given me the question like this, Nana. Right? What he said here. The function f of x is equal to logarithm of x plus under root of 1 plus x square is dash even, odd, neither even or odd. Okay, either even or odd. Something he has given like this 4 options. I'm not writing those all options. I'll stick on to the basic rule. Whatever he has given, I have taken here. Root 1 plus x square. I'm writing here like this, x plus c nana minus x. I substituted minus x. Whether it is even or odd, rule is rule. If I substitute here, I'll get same as it is. Now what I'm doing here, rationalizing. Interesting one. If I rationalize this, Nana, I may get like this. Plus x by root 1 plus x square plus x. देखो भाई ऐसा है. ये पूरा एक under log है. So logarithm of this is nothing but what? 1 plus x square minus x square divided by
रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यार क्या हो रहा, लॉगरिथम ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यार इसी को ऐसा लिख सकते हैं, log 1 मीन 0, सो यार 0 माइनस log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनता क्या है भाई, माइनस एफ ऑफ एक्स। सो दिस इज व्हाट, odd function. Okay, odd function is, note here also, the same 2 points I'm writing. Odd function is, okay, symmetrical in opposite quadrant. Symmetrical in opposite quadrant. Okay, and the point lies on the point if x comma y lies on odd function. Minus x minus y is also what lies in on the same function. Those two lines I'm going to write, guys. Yes, दो एग्जाम्पल्स है यार, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। ओके, देख भाई यहाँ पे पॉइंट अगर से मैं एक्स का मोबाइल लिया, तो ये पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, माइनस एक्स का होगा। द सेम थिंग आई सेड, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन बोल सकते हैं, यानी सिस्टर सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन भी बोल सकते हैं और ऑपोजिट क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। ओके, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन रिलेटेडली आई डिस्कस। Okay, related to these two functions, one more most important point is that every function can be expressed as uniquely sum of even or odd। अब यार डाउट आ रहा होगा क्या कर रहे हैं सर, आप बोलो। देख भाई मैं क्या कर रहा हूँ, 2/2 एफ ऑफ एक्स लिख लूँ यार, क्या होता 1/2। देख यार मैं ऐसा लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स लिख लिया। यार ये 1/2 प्लस डिफरेंट वे में लिख रहा हूँ। देख एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये क्या है भाई, इवन फंक्शन। ये क्या है यारो, odd function. So every function can be expressed as sum of even and odd function, यही बोला था। और नेक्स्ट यहाँ पे बात बताना चाह रहा हूँ। ओके, ए फंक्शन में भी, देखिए यार सब फंक्शन इवन ऑड नहीं होते हैं। ओके, ए फंक्शन सी, ए फंक्शन में भी, ओके नेदर इवन और ऑड भी हो सकता है, नेदर इवन नॉर ऑड भी होता है, ये याद रखना है भाई। एग्जाम्पल देख ले भाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यार एक्स स्क्वायर साइन एक्स लिखा, समझ ऐसा है, ये क्या नेदर इवन और ऑड का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल। अब ऐसा हो सकता, अब ये डाउट आ गया तो आपको ये भी डाउट आता होगा, कोई ऐसा एक फंक्शन हो जो बोथ इवन और ऑड होगा। यस है एक फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज द फंक्शन, बहुत अच्छी बात है यार, इज द फंक्शन विच इज बोथ, विच इज बोथ इवन एंड ऑड फंक्शन, राइट। और एक बात है यार, इन इन दोनों की बात क्या है बोले, एवरी इवन फंक्शन इज नॉट वन वन, एवरी इवन फंक्शन इज नॉट वन वन। आपको पता है, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज गोइंग टू कट इट 2 पॉइंट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट। वही ऐसा बोल सकते, एवरी ऑड फंक्शन इज वन वन। ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में था यार, इस दे दिया। चलो यार अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, पीरियोडिक फंक्शन को जाएंगे। ओके, वो भी डिफरेंशियल कैसा रहता है, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक if f of t plus x is equal to f of x. t is a least positive integer. Okay, least positive real number, not integer, real number होना चाहिए। okay, example मैं लिख के बता रहा हूँ, देखो यार क्या इंटरेस्टिंग वन, सिंपल। a function f of x is said to be what, periodic, जो अभी मैंने कहा था। if there exists a positive real number such that f of x plus t is equal to f of x, यार ये t कैसा रहना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव फंडामेंटल, लीस्ट पॉजिटिव रहना चाहिए रियल नंबर, देन यू कैन से दैट फंडामेंटल पीरियड, राइट। मतलब बहुत सिंपल सी है भाई, ये अलजेब्रिक फंक्शंस कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन के ले लो यार, पीरियडिक नहीं होता एक्सेप्ट फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा क्योंकि देख भाई,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर से मैं फ्रैक्शनल पार्ट लिया तो क्या होता, देख एक्स प्लस वन फ्रैक्शनल पार्ट अगर से मैं लिखा, वन तो जाएगा, ये बनता क्या है देख, ऐसे बनता, या टू लिख ले, थ्री लिख ले, कुछ भी लिख ले, ऐसे आएगा ना, टू रहेगा। ये भी क्या होगा, इसे होगा, चलते जाएगा। दिस इज करेक्ट। सो व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस वन। असल पीरियड बोले तो क्या आ रहा है, लेंथ ऑफ द शेप ऑफ द फंक्शन। सी दिस, देख भाई यहाँ पे इसका लेंथ देख, ये जिसका हाइट है ना, वो ये दो जो जो लेंथ है ना, वो सेम रिपीट होते रहता, इसलिए इसका पीरियड को क्या बोलते हैं, दिस द इंटरवल इन विच द शेप ऑफ द डायग्राम, लीस्ट शेप ऑफ द डायग्राम इज रिपीटेड, इसको बोलते हैं पीरियड। देख भाई ऐसा, माइनस वन माइनस टू, इसको बोलते हैं पीरियड। ठीक है, वो पीरियड है। चल, ऐसा नहीं तो और एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। देख भाई, यहाँ पे और एक एग्जांपल ड्रॉ कर लूँ समझने के लिए भाई। देख यार, ये साइन है, ये जीरो से यहाँ पे देख भाई टू पाई है, राइट। यार एक ब्लैक पेन से ड्रॉ कर लूंगा तो मेरे ख्याल से आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देख यार, यही शेप है जो छोटा सा, छोटा वाला, ये रेड है, इसका लेंथ कितना है देख, टू पाई है, इसका लेंथ क्या है, टू पाई है। सो दैट पीरियड ऑफ साइन एक्स इज व्हाट, साइन एक्स अगर से फंक्शन है, इसका पीरियड कितना रहता, टू पाई। वैसे ही अभी मैं पेज पलटा के लिख देता हूँ, देख लो, राइट। साइन एक्स है तो उसका पीरियड क्या रहता, टू पाई रहता। वैसे कॉस एक्स है, इसका पीरियड क्या रहता, टू पाई रहता। tan एक्स है, इसका पीरियड क्या रहता, पाई रहता। कॉट एक्स है, इसका पीरियड ये भी पाई रहता। डायग्राम ड्रॉ कर लो यार, समझ में आ जाएगा। सीकेन एक्स का टू पाई एंड कोसिकेन एक्स का टू पाई रहेगा। अब बात यहाँ समझने वाली है, सी दिस इज फंक्शन, ओके, यू शुड हैव अ क्लैरिटी। कैसा क्लैरिटी मिलेगा, देख भाई, सीखने वाले को ना एग्जांपल्स देके समझा देता हूँ, देख लो यार। ओके, पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया, यहाँ पे मैं साइन एक्स लिया, तो तू बोलेगा टू पाई, बहुत अच्छी बात है यार। अगर से मैं बोला साइन एक्स माइनस थ्री बोला, तभी भी क्या होगा, टू पाई होगा। साइन एक्स प्लस थ्री लिया, वो भी क्या होगा, टू पाई होगा। चल, थ्री साइन एक्स लिया, वो भी क्या होगा, टू पाई होगा। बाढ़ में जान दे यार, सामने कुछ भी मल्टीप्लाई कर ले, कुछ नहीं होगा, राइट। माइनस थ्री लिख, ये भी क्या होगा, सेम एज टू पाई रहेगा। लेकिन भाई अगर से तू मल्टीप्लाई करेगा, थ्री एक्स ऐसा करेगा, तो टू पाई बाई थ्री। अगर से तू ऐसा लिखेगा, टू एक्स प्लस फाइव ऐसा लिखेगा, यस, टू पाई बाई टू, इसका पीरियड क्या होगा, पाई। समझने वाली बात है भाई। इज ऑल एग्जाम्पल्स, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ऐसे एग्जाम्पल्स देते चले आ रहा हूँ। एट वन देख, क्या होता है देख भाई, यहाँ पे देख, थ्री है, साइन फाइव एक्स प्लस टू है, माइनस टू है, कुछ भी लगा ले, अपने को यहाँ पे नहीं चलेगा, टू पाई बाई फाइव। कोएफिशिएंट उसको डिनोमिनेटर में लिख देना, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पीरियड देख भाई, इफेक्ट करता कब, कब इफेक्ट होता पीरियड, जरा बता दे तू, देखिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सेड इट टू यू दैट, अगर से मैं ऐसा लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देख भाई, मॉड साइन एक्स है प्लस मॉड कॉस एक्स है, ये ऐसा लिया, तो पीरियड क्या होगा, इसका टू एक्स, इसका टू एक्स नहीं लिखना है आपने, आपने को क्या करना है, बेसिक डेफिनेशन, वाई बाई टू प्लस एक्स पे जाओ, हाफ कर दे। अगर से मैं सिर्फ ऐसा ही दिया समझ, थर्ड वन फॉर एग्जाम्पल, ओनली मॉड साइन एक्स बोला, तो क्या होगा, यहाँ पे देख भाई, पाई था ना, थोड़ा चेंज करके देख ले, कम हो जाएगा, मॉड साइन पाई प्लस एक्स, लिख दे भाई, मॉड साइन एक्स होगा, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज के मुताबिक साइन एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। तो पीरियड क्या है भाई, इसका पाई है, वही मैं ऐसा दिया समझ, वो और चेंज होगा, साइन पता है टू प्लस एक्स, so whenever we apply mod, it is going to be changed है ना,
इवन पावर्स मॉड अगर से है तो पीरियड चेंज होता। बता रहा हूँ आपको एग्जांपल लेके। ये cos x हो जाएगा, मॉड sin x रहता, चलेगा यार। मॉड cos x प्लस मॉड sin x, देख भाई f of x, व्हाट इज द पीरियड हियर, 5/8। वही मैं ही थर्ड के फोर्थ एग्जांपल ऐसा लिया समझ। f of x इज इक्वल टू, क्या करा, sin x माइनस cos x लिखा। अब क्या होगा, 5/2 नहीं होगा, अब क्या होगा, पाई होगा। ठीक, x प्लस पाई चेंज तो हो रहा, 2 पाई नहीं पाई। ये क्या होता, एफ ऑफ एक्स आएगा। सिंप्लीफाई करके देख ले यार, आ जाएगा। फिफ्थ वन देखो, ऐसी। अब ऐसा चेंज होते रहेगा। अगर से मैं बोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देख भाई, साइन एक्स दिया, यहाँ पे टैन एक्स दिया, इसका पीरियड बोले तो इसका पीरियड क्या है यारो, 2 पाई है, इसका पीरियड क्या है, पाई है। आप क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना। एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड पाई, एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड पाई क्या होता है यारो, ये पाई से करे तो 2 1, फिर आपको कितना आता है, 2 पाई, ऐसा। ओके, ऐसा करना पड़ेगा। सिक्स एग्जाम्पल, थोड़ा एग्जाम्पल्स लेके बता दे रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 sin 3x प्लस tan x, ऐसा दिया। इसका पीरियड क्या होता है भाई, 2 पाई/3। इसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। तो लेकिन एलसीएम ही करना है अपने को, एडिशन रो सब्ट्रैक्शन रो, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। न्यूमरेटर का एलसीएम देख लो, 2 पाई होगा। डिनोमिनेटर में जीसीडी देखो, वो क्या, जीसीडी और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है यार, 1। तो 1 ही लिखो, आंसर कितना होगा, 2 पाई होगा। ओके, ये क्या है, पीरियड। राइट, सेवरल एग्जांपल्स, वी कैन गिव सेवरल एग्जांपल्स हियर। Suppose question is given like this. What is that? F of x plus k plus f of x, he has given. What is the period of this function, he said. Okay, I want to write like this, Nana, minus f of x. Then what I'm doing here, I want to replace x as what, x plus k once again. तो क्या हो रहा है देख भाई, x plus k होगा माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस के होगा। ये वन है समझ। यहाँ पे क्या हो रहा है, x+2k होगा। अरे यार, एफ ऑफ माइनस क्या हो गया होगा, एफ ऑफ एक्स होगा ना। तो व्हाट इज द पीरियड हियर, पीरियड इज, ठीक है, ऐसा भी सॉल्व कर दो। ओके, विल मॉड द नेक्स्ट वन। ओके, नाउ वी डिस्कस पीरियोडिक फंक्शन। Now we'll go for next one. What is that? Domain of the function. Here I would like to give some few examples. Many students said it to me that give some simple example first. Yeah, definitely I would like to give some simple examples so that they are comfortable with this. And afterwards, after domain range, I would like to discuss. Straight away, I'll go over the problems now. What are the problems here? See this guy. Okay. What he said here, find the domain of the following. देख भाई, अगर से फंक्शन ऐसा दिया, x² + 2x + 1 रेशनल फंक्शन इज गिवन, x² - x + 6 करेगा क्या भाई, x² - x 6 should not be equal to 0, denominator should not be equal, x² - 3x + 2x - 6 should not be equal to 0, so x is not equal to 3 or -2। तो मतलब आंसर डोमेन क्या होगा, r -2 and 3। दिस इज योर आंसर। एक एग्जाम्पल था। अगर से मैं ऐसा लिया समझ, कैसा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/log x लिया, ये क्या होगा यार। पहली बात तो डिफाइन करना बहुत इजी है। अगर से लॉग में और थोड़ा लगा देंगे, मॉड लगा देंगे, चल अब क्या होगा, देख भाई, log 1 ही 0 है यार। तो यहाँ पे देख, x शुड नॉट बी इक्वल टू -1 होना है, 1 होना है। और तेरा ऊपर से 0 हुआ तो नॉट डिफाइंड है, log 0 इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो यार 0 भी नहीं होगा, मतलब r -1 0 1, दिस इज द डोमेन। ए एग्जांपल है। सेकंड वन, थर्ड वन देख भाई, और एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सिंपल सिंपल एग्जांपल। 3 to the power of x
minus 3 to power of minus x plus a and 3 to power of x minus 3 to power of minus x ऐसा दिया। इसको क्या करेंगे? सिंपल सी बात है भाई, 3 to power of x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो बनता क्या है वो देख लो, हो जाएगा 3 to power of 2x minus 1 should not be equal to 0। तो हो रहा क्या भाई, 3 to power of 2x should not be equal to 3 to power of 0, so x should not be equal to 0, so r minus 0 is the domain। ओके, सम और इधर से ऐसा दिया समझ भाई, लॉगरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर बेस 16 कुछ दिया, ले ले यार कुछ ना होता। क्या होगा यहाँ पे, अंडर रूट में जो भी फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा देख, एक्स स्क्वायर 16 है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ऐसे लिख सकता 116, बेस बहुत बड़ा है तो क्या होता है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 greater than equal to 0, that means x belongs to minus infinity to minus 1 union 1 to infinity। लेकिन यार यहाँ पे क्या दे रहा, एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, यही है यहाँ पे, x is greater than 0, so that means this is not the answer, right? x square is greater than 0 is true बोले तो आओ, it's true for all real numbers except 0। log 0 is not defined ना, तो इसलिए क्या करना, 0 नहीं है। यहाँ पे देख 0 है क्या, नहीं है, तो अब दोनों को देख ले भाई, इंटरसेक्शन क्या होगा, यही होगा, इसलिए आंसर है सर। ओके, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। देख भाई इसका क्या होगा, जस्ट ग्रेटर देन 0, या सोच के देख भाई, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एक्स कब होगा, नेगेटिव ले ले ये पॉजिटिव हो जाएगा, फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज इट इज करेक्ट, सो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी 0 इज अ डोमेन। ये हो गया। अगर से मैं ऐसा दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई, ये स्टेप एक्स माइनस एक्स है, ये क्या होगा यार, स्टेप एक्स माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब स्टेप एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू एक्स कब नहीं होता वो देख लेना। तो ये इंटीजर है तो सेम होगा ना, वो इंटीजर नहीं होना, सो एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, आर माइनस जेड इज द आंसर। ऐसा सिंपल सिंपल दे दे के समझा रहा हूँ मैं, छोटे छोटे एग्जांपल्स। बहुत लोगों को दिक्कत रहती है यार ये डोमेन फाइंड आउट करने में, इसलिए मैं ऐसे के एग्जांपल्स ले रहा हूँ पहली बार। ओके, यहाँ पे देख भाई 4 - x ऐसा लिए, बेस कुछ भी नहीं दिया बोले तो नेचुरल नंबर्स ले सकता, आई मीन बेसिस ई, नेचुरल लॉगरिथम। ओके, ऐसा सेवेंथ वाला दिया, तो अभी क्या करेंगे, करना क्या है, तो अलग से ले ले, x - 2 एक ले ले, बीच में प्लस आर माइनस कोई मायने नहीं रखता भाई, टू टेक लाइक दिस 4 - x, बी केयरफुल, x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली एंड रहता है, प्लस रहा तो एंड, माइनस रहा तो भी एंड, तो क्या रहता, 4 - x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड 4 - x नॉट इक्वल टू 1, लॉग 1 क्या होता है, 0 होता है ना, इसलिए वो नहीं रहना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देख भाई, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x इज लेस देन 4 एंड x इज नॉट इक्वल टू 3 है, तो मतलब x इज ग्रेटर देन 2, तो 2 टू इन्फिनिटी लिख दे सकता हूँ। यहाँ पे x बिलोंग्स टू, ये क्या होता, माइनस इन्फिनिटी 4 होता, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r - 3 होता। तो यार पूरे मिला के देखेंगे तो क्या होगा, एंड है सबके बीच में, एंड एंड है, तो 2 to 4 आएगा ओपन, अब 2 to 4 के बीच में 3 है ना, वो निकाल दो बस, ऐसा रहेगा, ये होगा तेरा आंसर। देख लिया ना, चल अभी एथ वन देखेंगे। एथ वन एग्जाम्पल ऐसा ले रहा हूँ यार, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर ऑफ रूट एक्स, और यहाँ पे बना के कॉस एक्स ऐसा लिया। तो यार इसका देख, एक्स इज ग्रेटर देन 0, अरे इक्वल टू 0 भी लगा ले चलेगा, राइट, एंड कॉस इज डिफाइंड फॉर व्हाट, ये तो रियल नंबर है, तो आंसर दोनों को मिला दे क्या होगा, 0 to infinity होगा, दिस इज आंसर। ओके, होगा भाई ऐसा आंसर देना पड़ेगा। ओके,
नहीं तो देख लेंगे। हम्म। अब अगर से मैं बोला, देख कैसा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/mod x+x लिया, तब क्या होगा, mod x शुड नॉट बी इक्वल टू -x होना। ये कब होगा, नेगेटिव डाल ले तो हो जाएगा, राइट। तो x बिलोंग्स -∞ टू 0, ऐसा होगा, राइट। ओके यार, ये एक्चुअली मैं कहने का मतलब मेरा ऐसा था, देख +x, ये कब जीरो होता ऐसा, लेकिन अपने को क्या चाहिए, ये जीरो नहीं होना ना, तो x बिलोंग्स टू 0 to ∞, ऐसा नहीं, ये अपना डोमेन, ये कब जीरो होता, फॉर ऑल नेगेटिव नंबर्स इट इज जीरो, लेकिन अपने का डोमेन क्या है, ये इसके अलावा मतलब 0 to ∞, ऐसा होगा यार 10th वाला। चल भाई, ये तो ले लिया। अगर से मैं ऐसा दिया समझ, √1 - mod x से, अब इसको क्या करेंगे, 1 - mod x greater than or equal to 0, mod x is less than or equal to 1, मतलब mod x is lies between 1 and 1, ऐसा लेना। ओके, और 11th वाला देख, ओके, लॉगरिथम ऑफ x-3 और 6 - x दिया समझ, तो करेगा क्या, x-3 6 - x, ये तेरा पॉजिटिव होना है, x-3 है, और x-6 ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब ये तेरे को आना PNP मेथड बोलते हैं। ये 6 है 3, यहाँ से देख, लेस देन है तो नो से स्टार्ट कर, नो, यस, नो, तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू 3 to 6, ऐसा होगा, राइट। मजेदार बात ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम होता, तो कैसा यार हो, 5 f(x) अगर से मैं ऐसा दिया tan−1 5x, ये क्या होगा, कुछ चेंज होता, यहाँ पे चेंज क्या होगा, कुछ भी नहीं होता यार, 5x लिख ले, 10x लिख ले, कुछ भी लिख ले, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, उसका तो डायग्राम ऐसे ही रहेगा। तो x बिलोंग्स टू आर ही होगा, ओके, x बिलोंग्स टू क्या होगा, आर ही होगा, -∞ to ∞। वही, अगर से मैं कह दूं कि भाई, अगर से मैं इसी को साइन इनवर्स कुछ ऐसा लिख दूं, तो तब क्या होगा, जरा देख लेंगे। ओके, एक मिनट यहाँ पे देखो यार, ऐसा दिया, तो यार ये होगा, देख इसका डोमेन ऐसा है साइन इनवर्स एक्स का, तो वो एक्स को क्या होगा, 1/5 लेस दैन इक्वल टू एक्स 1/5, ये होगा तेरा डोमेन। ओके, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट नाउ, थोड़े बहुत और एग्जांपल, one more example I have taken here, 14th one, this is the one ना, so what I did here, sin inverse x, ये ऊपर वाला ले लिया न्यूमरेटर, and you know very well that x lies between -1 and 1, whatever is there, it lies between -1 and 1, so adding 3 I got it like this, so x belongs to 2 to 4, I got it numerator, but it is not the answer, and denominator I have taken here, it is greater than or equal to no, only, only greater than, because it is in the denominator, so open interval -3 to 3. Now you see 1 and 2, if you count, this is what, -3, here it is 3, here it is 4, this is what, 2 है, ये 2 to 4 है भाई, और इन्हें बोल रहा हूँ -3 to, तो तेरा आंसर क्या होगा यार, 2 to 3 इज आंसर, ओपन, दिस इज क्लोज, ठीक है। एक क्वेश्चन है यार, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं यार, यहाँ पे बात समझ में आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आई टेक साइन इनवर्स ऑफ log x² by 2 बेस 3 लेंगे,
तो अभी क्या करना पड़ेगा मुझे? आई हैव टू डू लाइक दिस, एक्स स्क्वायर बाई टू बेस 3 lies between -1 to 1. You see, same rule I am adopted here. ये क्या होगा? 3 inverse x square by 2. This is 3. So 2 by 3 less than equal to x square is equal to what? 6. I multiplied with 2 here. I got it in this way. So I may get two cases, right? I may get two cases here, right? I may get here two cases. Suppose if I take this is 3 nana, so it will become what? 3 रहता, 2 के बजाय अपने को क्या होता, थोड़ा आसान हो जाएगा। कुछ भी नहीं यार, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही रहेगा कैसा भी। क्या होगा? 3, अगर से 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर ले 1 एंड 3, थोड़ा इजी हो जाएगा बस। इसको क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर है, बीच में क्या एंड रहता, इज इक्वल टू 3। ये क्या होगा देख, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to infinity एंड एक्स बिलोंग्स टू -3 to 3, ऐसा होगा। दोनों का देख ले, मिला दे, अब बनेगा यार x बिलोंग्स टू -3 to -1 यूनियन 2 to 3, not to 1, it is 1 to 3. Okay, I have to write here close because close है ना, तो close लिखना पड़ेगा। Okay, and okay, I'll take one more example. 9 minus x square है, okay, base is x is there, so what you have to do, x is positive, x should not be equal to 1 base, and you remember 9 minus x square is greater than 0. The rules are rules. तो क्या होता है भाई, x belongs to 0 to 1 यूनियन 1 to infinity, ये है। x belongs to ये क्या होता है? -3 to 3 है। दोनों को मिला दे भाई, बनेगा क्या? x belongs to 0 to 1 यूनियन 1 to 3 इज द आंसर। दो मिला दिया। 17 वाला थोड़ा बहुत एग्जाम्पल और एक ले लो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यार। 4 minus x square, you know very well, should not be equal to 0. X square should not be equal to 4. So x belongs to r minus -2 and 2 ले सकते हैं। 18th one, अगर से मैं ऐसा दिया, देख भाई, f of x is equal to under root of 1 minus under root of 1 minus root of 1 minus x square है, ऐसा दिया तो करेगा क्या यार? कुछ भी नहीं, ऐसा दो बार है ना, तो एक बार ऐसा लेगा, अब होगा क्या? अंडर रूट 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एस बी एस कर ले, 1 हो जाएगा, ऐसा है, बन गया। तो रूट अब बनता तो ऐसी है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो रहेगा। एक्स स्क्वायर लेस देन 0, सो एक्स लेस देन 1, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, एक्स बिलोंग्स टू व्हाट? -1 to 1। ऐसे के बहुत सारे छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके मैंने समझा दिया भाई। जब प्रॉब्लम्स करना है तब अपन देख लेंगे, इसमें डोमेन के बता दिया। अब क्या करना है अपने को? नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट रेंज नाउ। Finding range, we have several methods now. One is what, first type 1, I'll say, use of arithmetic mean is greater than equal to geometric mean. Okay, यार एग्जाम्पल दे देते हैं समझ में आने के लिए। f of x is equal to x plus 1 by x दिया समझ, फाइंड रेंज बोला। ओके, व्हाट? फाइंड रेंज इफ यू सेड, तो क्या करेगा यार? बहुत सिंपल है, देख, अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू 1 बाई एक्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स, हो रहा क्या है? ग्रेटर देन 2, मतलब 2 to infinity। इसका रेंज क्या होगा? इन्फिनिटी ओपन
2 is close. ओके, सिंपल एग्जांपल सा तो मैंने ले लिया, ऐसा कुछ बात बन गई। ओके, ऐसा हो सकता है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। देख भाई, अगर से क्वाड्रेटिक ऐसा दिया तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ए पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, रेंज होगा। ये नेगेटिव है, ए नेगेटिव है तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं अपन। तो यार यहाँ पे एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ, देखो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। वाई इज इक्वल टू बोला कि एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं सिंपल सा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है। तो यार ये लिखते तो वक्त ऐसा लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी। ऐसा देखो, परफेक्ट स्क्वायर बना लो, 2 × 3/2x, ये 9/4 माइनस 9/4 प्लस 4। फॉर्मूला नहीं यूज करा अभी, वो भी बता देता हूँ। होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 16 बना, 16 माइनस 9 7, 7/4 होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा यार इसका, 7/4 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ये 7/4 टू इन्फिनिटी, अगर से तू फॉर्मूला यूज कर है। और देख, ए क्या है तेरा, 1 है, ग्रेटर देन 0 है ना, हाँ। ए फॉर्मूला 4ac माइनस बी स्क्वायर, ए यूज करना है। और ए क्या है, 4ac। ओके, 4ab, 4ac, सी कितना है, 4 है, राइट। माइनस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर बाई 4 × 1। ये हो रहा क्या भाई, 4ac, ये 1 है यार, 16 माइनस कितना आ रहा, 7, मतलब 7 टू इन्फिनिटी। ये भी, वो भी मामला वही है ना, टू इन्फिनिटी था। चल, तो बन गया बात। तो फार्मूला भी यूज कर ले या ये यूज कर ले। ए टाइप 2 था तेरे पास। अब देख भाई, टाइप 3 है। एक एक एग्जाम्पल देके बता दे रहा हूँ भाई, पर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देख भाई, y इज इक्वल टू f(x) लेके सिंप्लीफाई करते, एग्जाम्पल दे रहे हो। y इज इक्वल टू सम एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा दिया, क्या करेगा, ये f(x) फंक्शन ऐसा दिया। तो तू करना क्या है, y इज इक्वल टू f(x) ले ले, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले, तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाय 1 माइनस वाई, राइट। और आएगा देख भाई, क्या होगा यार, एक्स इज इक्वल टू √5 बाय 1 माइनस वाई होगा, वाई बाय 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई बाय वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, वाई बिलोंग्स टू 0 to 1, 1 ओपन, 0 क्लोज। डिनोमिनेटर क्वांटिटी कभी भी इक्वल नहीं होता। So like this we can find domain now. Okay, this is what type 3. Okay, type 4 क्या है देख भाई, to find uh, range, to find range of f of x, proceed as follows. First one, let y is equal to f of x. Okay, you get dy by dx of dash x. This is what second changes. And now in the third case, dy by dx equal to 0, or you can say that dy by dx is equal to 0 or f dash x equal to 0. You got some, you got x has got some a and b after making that a and b, right? You got x as something a comma b, nothing will happen. Fourth one क्या होगा यार, f double dash x. You can say that, okay, f double dash x is positive, or you can say d square y by dx square is positive. So
If it is positive, then f of x is what? Minimum. At x is equal to a, minimum value is f of x. F double dash x is what? Negative, or d square y by d square is negative, fifth point. So f of x is max at x. I'm taking some different value, nothing is there. Max value is f of b. What is the range? Range is minimum and maximum. F of a, f of b. You have to write like this. This is one method. And the last one is type 5 is there now. What is type 5? Yeah, type 5 is rational function is there whose degree is 2, or at least one of them is what? Quadratic. Then you write like this. And after writing these things, quadratic equation in terms of x you write down. Quadratic equation in terms of x you write, and go for delta is greater than or equal to 0. Okay, what is that? Quadratic in terms of x. Then use this condition. Delta is greater than or equal to 0. Example, yeah, beautiful example I have. F of x is equal to x square minus 3x plus 4 divided by something x square plus x plus 1 is there. What do you do? Y. I said the same thing. 3x plus 4, x square plus x plus 1. So what happened? X square, y minus 1, x, y plus 3 plus y minus 4 equal to 0. Okay. And now is a quadratic in terms of x. So y plus 3 b square minus 4 ac. Okay, so y square 6y 9 and 4 into y square 5y plus 4. So when you simplify, minus 3y square plus 26 plus 20 and this is 6. Here minus 16 this. Okay. 3y square 26y plus 7 less than or equal to 0. Okay, we got it like this. Once again, what you have to do? Discriminant is, this is a quadratic equation which is less than 0. Less than 0 means what? Discriminant of this one is definitely less than 0. Okay, like this. Yeah, committed a small mistake here. It will be 1. Right, if it is 1, then it will be 1. So this one, you see this. Everything, whatever I wrote here, like this we can do. Discriminant is greater than 0 and it will be in this way. Okay, guys. Hope so that it is very clear. Okay, nice one. Okay, like this we can do range. All right, 5 different types of range problems I discussed. Whether we, for example, seen different types of functions. Say that sine inverse x is there. Okay, and cos inverse x is there, and also tan inverse x is also there. What is said here? The domain of this one is -1 to 1. Domain of this one is -1 to 1. Domain of this one is R. What is a common domain? Okay. Domain of F is
Now add na -1 to 1. Okay. Now what I'm doing here? See, x lies between -1 to 1. So I'm applying tan inverse. So minus pi by 4. So pi by 4. Adding pi by 2 now. Okay. So pi by 2, if I add it, I'll get here pi by 4 less than equal to this. You can write sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, 3 pi by 4. What is the range means? The range is pi by 4 to 3 pi by 4. Okay. Pi by 4 to 3 pi by 4 we get. And seventh one is also there. Suppose, let us say increasing function. As I said it to that, increasing a to b. So range क्या होगा यार? F of a, f of b हो जाएगा. Okay, if it is decreasing, strictly decreasing function. So the range क्या होगा यार? F of b, f of a होगा. Okay, strictly increasing, strictly decreasing function ऐसा होता है. Okay, as I said it to you that I discuss all types of theoretical points related to functions, more or less. And now I want to discuss some problems. Exercise 1. Okay, exercise 1, I'll keep the name. Exercise 2 is purely PYQs. Here also I'll discuss, but simple problems, some easy problems I'll take. And the next one is PYQs, right? Those whoever go through this all things, Nana, they'll get total command in this. Yeah, first problem, f of x is equal to, and f is given like this, then alpha beta is how much is said. So we need not worry. This is what given is what f of x is equal to alpha x plus beta. 1 comma 1 if you take nana, that means f of 1 is equal to 1 nana. Substitute here 1 is equal to alpha 1 plus beta. So alpha plus beta is equal to 1, 1 you got it. Take another one, 2 comma 3 is there. Substitute, that means f of 2 is 3 nana. So 2 alpha plus beta is equal to 3. Second, first. So here alpha plus beta is 1, 2 alpha plus beta is 3. Subtraction, minus alpha is equal to minus 2, alpha is equal to 2, beta is equal to minus 1. Like this, we'll get now. Okay, we'll move on to the next one, second one. See this, guys. Here he has given f of x, 5x plus 3, and this is 4x minus 5. So f of y is asking 5y plus 3 by 4y minus 5. That you can write 5x plus 3 by, wherever y is there, in the place of y I substituted this. Okay, 5x plus 3 by, like this. And the moment you are going to simplify this, you see this 25x plus 25 plus 12x minus 15 divided by 20x plus 12 minus 20x plus 25. So how much you are getting here, sir? 37. Okay, we're getting 37x. 3 5s are 15, sir. It is. So in the denominator,
In the denominator, what I'm getting here, 37, I think. So I got it x. So f of I is how much now? It's x. I got it. Okay, right. And third question is given like this. If f of x is equal to 4 minus x minus 7 whole cube to the power of, okay, 1 by 5, then f inverse x is asking is how much. So what do you have to do? You know, y is equal to f of x, 4 minus x minus 7 whole cube, whole to the power of 1 by 5. Y is equal to f of x means f inverse y is equal to x is 1. Y is equal to 4 minus x minus 7 whole cube. Everything I want to change in terms of y to the power of 5, 4 minus x minus 7 whole cube. So x minus 7 whole cube, 4 minus y to the power of 5. X is equal to 7 plus cube root of 4 minus y to the power of 5. So your answer is directly I'll write f inverse x, 7 plus 4 minus x to the power of 5. This is your answer. Okay, we'll move on to the next one. Okay, guys, see this one. What he has given? X plus y is equal to f of x plus f of y. And he said that f of 1 is equal to 7. Yeah, I want to go with this one. 1 plus 1, I'll write. What is going to happen? F of 1 is also f of 1. 2 times of f of, that means 2 into 7, I'll get f of 2. For example, f of 3, 2 plus 1, if I write f of 2, f of 1. 2 into 7 it is, and it is 7. So 7 if I take 3. Okay, so f of 3 is 3 into 7. That means f of x become what? Something kx. So f of 1 is equal to how much? K into 1. But it is k is 7. So the function is f of x is equal to 7x. But that fellow asking 1 to n f of x. How much? F of 1, f of 2, so on. F of n. 7 you take common. 1 plus 2 plus 3 plus so on plus n. 7 into n plus 1 divided by 2 is your answer. Okay, guys? Yeah, I'll go for the next one. Okay, fifth one I'm writing here. You see this now. What he has given? F of x. That is a to the power of x by a to the power of x root a. Yeah, what I'm writing here, 1 minus x. So a to the power of 1 minus x by a to the power of 1 minus x plus root a. Yeah, I'm simplifying a by a to the power of x. Here a plus root a to the power of x by a to the power of x. So I may get like this now, root a by root a plus a to the power of x. This is f of 1 minus x. So now if I add here f of x plus f of 1 minus x, probably we are getting what one. What I'm doing now, x is equal to 1 by 1997, I'm substituting. F of 1 by 1997. So f of 1 minus means 1996 by 1997 is 1. So like this.
1 by 1 if I substitute here. 2 by 1997 here. 1995 by 1997 1. It will go. So 997 or 998 go. 997 will go. तो ये भी क्या होता भाई 997 में 99,000 आता. One more 998. This is also same 998. If we add all those things, this is 2 times is there. 1 time only we have to take. So 1 by 2. So how many times here? This you remember adding. While adding 1 to this all. So how many times? 1997 times. So that means 1 by 997. देख भाई यहाँ से आ रहा ना तो यार यहाँ तक तेरे को आएगा 1996 by 1997 क्या होगा देख यहाँ से लेके यहाँ तक जब ऐड कर रहा 997 आ रहा. अब ये लास्ट में एक ही बार ऐड करना है ना तो 2 इधर लेके 1 by 2. So here 997.5 is your answer. 997. Okay. Right? So we'll go for the next. Interesting one. F of x plus y and x minus y is equal to x by he has given. So what I'm doing here, let assume like this. Some m x minus y is equal to L. You add here 2x is equal to m plus L. M plus L by 2 will get y is equal to m minus L by 2. So y is m minus L by 2 will get. That means f of m comma L can be written as m plus L by 2, m minus L by 2. So you got it as f of m comma L, m square minus L square by 4. So that he said that arithmetic mean of f of xy and f of y minus x. Simple. F of xy is f of y minus x divided by 2. What is going to happen? X square minus y square by 4 plus y square minus x square by 4 by 2. 0 you are getting. Answer is 0 now. Okay. Move on to the next one now. Okay. Okay. It's an odd function he said. So f of minus x is equal to minus f of x you should get. So f of minus x means what happened? Minus ax to the power of 5 minus x cube c minus x plus dz. If d is 0, then it becomes then f of minus x is equal to minus f of x. So what is the condition? If it's an odd function, then d must be 0 now. Okay, d must be 0. Another one, what he has given here, 2f of x, 3f of 1 by x is equal to x square he has given. What I'm doing here now, replace x has got 1 by x. I may get like this now, 3f of x, 1 by x square. Say this is 1 and this is 2. I want to multiply 1 with 2 nana. So 4f of x
6 f of 1 by x square. 3 second one multiplied by 3 nana. 6 f of 1 by x 9 f of x with 3 na 3 by x square. If you add here, if you add here, minus 5 f of x is equal to 2x square by 2x square minus 3 by x square. He is asking if x is equal to 2, if you substitute minus 5 f of 2. This is 4 to the 8 and 3 by 4. Right. Okay. Simplify and we'll get the answer. We'll go for the next one now. Which one? We did 8th one now. We'll go for 9. Okay. F of x here is given as sin square x plus pi by 3 and cos x plus pi by 3 is there. Now what I'm doing here, 1 minus cos square x, I'm writing sin square x plus pi by 3 and multiplying dividing with 2 here. This is cos square a minus sin square b, cos of a plus b and cos of a minus b. Whereas here half into 2 cos a cos b means cos of a plus b plus cos of a minus b. Right? So what I'm getting here, 1 minus cos 2x plus pi by 3. Cos pi by 3. So 1 by 2 cos 2x plus pi by 3. 1 by 2 cos pi by 3. Of course, cos minus theta is cos theta. 1 minus 1 by 4. This is what? 3 by 4 I'm getting. Right. Mm-hmm. One minute. This is plus nano. So I get 5 by 4. So this is what f of x. That fellow said that G circle f of x. ठीक है. G of f of x. What is the value of f of x? 5 by 4. G of 5 by 4 is how much? 1. So G circle f of x is 1. Okay. We'll move on to the next. Okay. Question is given like this. F of x is equal to x plus 1 by x minus 1. F circle f of x means how much, sir? F of x. Let us find out what is going to happen. Let us see. So f of x plus 1 by f of x minus 1. That is x plus 1 by x minus 1 plus 1 by x plus 1 by x minus 1 minus 1. So 2x by 2. That means x you are getting. You got it as x. This is nothing but f square x is equal to what? X you are getting.
So f circle, f of x become what? F of x. That means f cube x is f of x. f4x is again same x, f of x. So f 2008 of x, if I say, then it become x. For even x you are getting, or you are getting f of x. So if I say that 2008 or 2024, if I said, then your answer is x only. If I say that 2025, then your answer is f of x. Okay, be careful with this one. We'll move on to the next one. Okay, here he has given x and this is 1 minus x. So what I did, f of x. In the place of x, f of x I substituted here. Here I concentrated. I wrote this total function in the place of this. You see these two. X, whatever is there. If I take x here, then you have to write here x. But the condition, whatever the condition is with this, here I am supposed to write. What I did, let me tell you, f of x ना, f of x में क्या है, x है, तो मैं x लिया. यहाँ पे क्या है, x belongs to q, ये लिख लिया. लेकिन ये जब लिया तो ये कंडीशन है ना, वो कंडीशन भी लिख लिया. अब देख भाई, f of x यहाँ पे क्या है, ये 1 minus x है. 1 minus x लिख लिया. 1 minus x यहाँ पे क्या है, belongs to q है, वो लिखा. लेकिन जब 1 minus x लिख रहा हूँ तो कंडीशन क्या है, ये लिखना. ऐसा. ऐसी मैं सेकंड वाले को भी ये यहाँ पे भी लिखा, x लिखा 1 minus x. लेकिन जब मैं सिंप्लीफाई कर रहा, x बिलोंग्स टू रेशनल, ये आ रहा, x एक बार रेशनल हो रहा है, एक बार रेशनल नहीं होता, होगा नॉट पॉसिबल, नहीं होता, एम्प्टी. ये भी क्या होता है, एम्प्टी होता. यहाँ पे क्या होता, यस ये आता. तो ये x कब है, रेशनल है तो भी है, x इरेशनल है तो भी है. तब क्या हो रहा, तो दोनों भी टाइम पे x है तो एफ सर्किल एफ ऑफ x क्या हो रहा, x हो रहा, ऐसा. ओके, प्लीज. This is interesting question. He has given defined like this, f of n and g of n. He is asking g circle g of n. ठीक है, क्या करा यार, दो केसेस ले ली. देख केस वन ऑड है, n ऑड रहा तो n माइनस वन क्या होता, इवन. यहाँ सब्स्टिट्यूट करा, -1 to the power of even n minus 1. तो -1 to the power of even number is 1, so n minus 1 आया. यहाँ फॉर्मूला है ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा, n into n minus 1. तो क्या हुआ, n कैंसिल 1 आ गया. अब जी ऑफ n कितना हो रहा है, जी ऑफ 1 बोले तो भी उतना है, जी ऑफ एफ ऑफ 1 बोले तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो बात तो 0 आ रहा. तो दैट इज नथिंग बट जी सर्किल जी ऑफ n 1 हो रहा. तो यहाँ पे देख, n अगर से इवन, क्यों ऐसा लिया, नेचुरल नंबर को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं ना, ऑड एंड इवन, इसलिए ऐसा लिया. जल्दी जल्दी होता बोल क्या कर दिया यार. एफ ऑफ n इज इक्वल टू, देख भाई, -1 टू द पावर ऑफ, ऑड बोले तो माइनस रहता, माइनस से जब मल्टीप्लाई करा तो -1 + 1 होगा. इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर, ऐसा सब्स्टिट्यूट करा, 2n-1. अब इसमें डाल दी. अब जहाँ कहीं पे भी है n, वहाँ पे प्लेस में क्या करा, 2n-1 सब्स्टिट्यूट करा. यहाँ पे देख 2n-1, यहाँ पे भी 2n-1 सब्स्टिट्यूट करा. तो मेरे को अंदर सिंप्लीफाई करे तो कितना, 2n-2 आया, माइनस से मल्टीप्लाई करे तो -2n + 2. यहाँ पे +2n है, कैंसल कर दे 1. यानी कि तू इवन ले ले या ऑड ले ले, तेरा रिजल्ट तो 1 आ रहा. तो जी सर्किल जी ऑफ n क्या होगा, 1 होगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन थोड़ा अच्छा है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. 13.1, he defined function like this now, f be a 1 function with domain this and range is this one, such that exactly one of the following statement is correct and the remaining all are wrong. So 3 statement is given, right? And he's asking that what is the value of f inverse 1. What I did here, I assume that first one is right. That means f of x is equal to 1 is correct. If first one is right, then remaining two are false now. So these two are false means what are the correct statement? F of y is equal to 1, f of z is equal to 2. So x and y both are mapping with 1. So definitely it is not 1, 1. So that means
assuming this one is false. And the next one, what I did here, I've selected the second. F of I is not equal to 1 is true. So that means remaining two are what? False. That means correct one is what? F of x is not equal to 1 and f of z is equal to 2. Not equal to 1 is there means the possibility is this. So definitely it is not 1. Now third case, I have gone for third case. It is also not 1 1. Not 1 1. So not 1 1 when it is there, assume that third case, z. If z is correct, that means f of z is equal to and not equal to 2 is correct. So then I can say that the remaining two are false. This false means not equal to 1 is correct. Equal to 1 is this is f of y is equal to 1. Okay. So f of y is equal to 1. X is not equal to 1 means let us say that x is matching with 2. And z is not equal to 2 means z is matching with 4. So this is a perfect example for A to B. So this is 1 1. So if it is 1 1, f of y is equal to 1 is correct now. So that f inverse y is how much? 1. This is the another one. Okay. So the next one. Next one, you see this now. Two more questions I would like to discuss here. Right. Given one is like this, Nana. F of 1 by x. And if I write here f of x, f of 1 by x equal to 0. What I'm doing here, f of x, f of 1 by x, f of x into f of 1 by x, subtracting 1, adding 1. Okay, I'll go for this. Now I may get here f of x minus 1 is 1 factor. The other one is 1 minus f of 1 by x equal to minus 1 bracket. But writing this one is good, Nana. 1 by x minus 1, if I write, it becomes 1. See, Nana, 1 is some f of, this is g of x, and it is inverse, then the result is correct. But that fellow said that is a polynomial. So polynomial means you can take anything power. So the only one is possibility is here. F of n, that is what? Plus or minus x to the power of n. If you take, then only you will get the answer. Right? Plus or minus x to the power of n. That means f of x minus 1 is equal to x to the power of n. One thing. So x to the power of n plus 1 will get f of x minus 1 is equal to minus. So f of x is equal to 1 minus x to the power of n. I'll get this. But that fellow has given what? F of 2. This 9 he has given. Right? So 1 plus 2 to the power of n is 9. 2 to the power of n is equal to 8. Possible. N is equal to 3. So your function is x cube plus 1. So what he is asking here? F of 3. F of 3 means 3 cube plus 1. 27 is the possible value. Okay. So we discuss here 14. Now I'll go for 15th one. Okay. 15th one is some periodic function problem I would like to discuss, guys. Okay, guys, this is the last one. Periodic function related one I'm discussing. He has given a function like this now. And what is the period of this function is asking. What I did here, I want to write this as what a minus b whole cube formula. Yeah, I did it here. I got success here. Actually 1 minus f of x I had to write. But taking minus common, f of x minus 1 I can write. A cube minus 3ab plus 3b square minus b cube. Right. A cube, this is a formula. A cube minus 3a square b plus 3ab square
minus b cube. Using this formula, I wrote like this now. So now one I have taken this side. So I got it in this way. So what to do here? I replace x by what? X plus p none. I substituted here. I got it in this one. Wherever x is there, I substituted x plus p. Now you see x plus p minus 1 means I substituted here. Everything get cancelled. Finally, what I got like this. 1 also get cancelled. X by f of x plus 2p is equal to f of x. What is the period? Period is 2p. So some 15 good questions I could able to discuss in this session, guys. So in the next section, I would like the third part is also there. In third part, exclusively PYQ questions and some more questions here. Some around 10 questions are there. This 10 question and PYQs 20-25 question. Overall 30-35 questions I discussed on. Okay, guys, I'll stop here. Right. I'll stop here, guys. So in the next video, I'll wind up this function. So that I tried my level best to justify this topic. I think we did it very good, Nana. We deal very good in this topic. So in the coming video, everything is going to be completed. What is that? 30 PYQs I have to discuss. Around 20 to 25 PYQs and some good questions. Overall 30-35 questions I'll discuss in the next video, guys. Okay. Right. I'll stop here. Bye, guys.